Hello students, welcome to Physical Chemistry lecture series for BSc final year students. आज के वीडियो में we'll discuss heat capacity of solids and its variation with temperature. For heat capacity of solid there is a law called Dulong-Pettit law. Dulong-Pettit law जो स्टेट करते हैं कि the heat capacity of solid, molar heat capacity, the molar heat capacity of solid, monoatomic solid, that is metals, mainly metals, is 3R, is constant, and its value is 3R, where R is universal gas constant. जो SI unit में the value is 8.314 joules per Kelvin per mole. इसका justification why the value is 3R from classical physics is कि in classical physics हम ये assume करते हैं कि solid के atoms, atom of solid acts as oscillator. वो अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं और जब वो ऑसिलेट कर रहे हैं मींस वाइब्रेशनल मोशन है और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है 3 होते हैं. देयर आर 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. देयर आर 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स. मींस एक वाइब्रेशनल मोशन को और एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस. और फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी corresponding to each vibrational degree of freedom is K into T, where K is this Boltzmann constant. Just to represent that's a Boltzmann constant, we write this suffix as B. So Kb into T. So Kb into T is the energy per degree of freedom from law of equipartition of energy. So for 3 degrees of freedom, it will be 3 kBT. So that's the energy corresponding to, and that will correspond to its inter energy. You can represent this by E or U. This is per atom. So the energy corresponding to the vibrational motion for an oscillator, which results into its inter energy, is 3 kBT. With Kb is a Boltzmann constant. Boltzmann constant क्या होता है? Boltzmann constant is gas constant, universal gas constant upon Avogadro's number. But this is for one atom. So for 1 mole, you have to multiply with the Avogadro's number. So this U will be equal to 3 N0 kBT for 1 mole, of solid. Or N0 into Kb is nothing but R. So internal energy, you can write this as 3RT. And how you define heat capacity? So heat capacity at constant volume is change in internal energy with respect to temperature at constant volume. So if I differentiate the energy, internal energy with respect to temperature, so this is 3RT dt at constant volume. So 3R is constant or dt with respect to dt temperature differentiation आपका 1 होगा. So that's nothing but equal to 3R. So that's the basis for Dulong-Pettit law कि heat capacity solid का assume किया, and from classical physics, this is the classical value. This is classical value.
So value obtained from classical physics, where the heat capacity of solid remains constant and does not vary with temperature. पर experimentally this has been found that कि अगर आप experimental data देखें तो experiment में आप देखोगे कि the variation of heat capacity with solid, so if I divide this CV by R and vary this with temperature, for most of the solid you'll find this variation like this, where ये आपका upper limit is your 3, so CV is equal to 3R. So 0 to 3 मान लो ये 2 and this is 1. It can do that in a scale. So what you get is कि with temperature CV change. The CV, this is experimental result. CV approach 3R when T is very high. T is very high. And when T approach 0, the CV approach 0. And that's the experimental finding. Now, how to justify this? Classical physics is unable to explain why the CV vary with temperature. Now, this was explained by, in 1905, by again famous scientist Albert Einstein. Einstein ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन किया था, और हमें पता है कि आइंस्टाइन ने 1905 में ही 5 पेपर उन्होंने पब्लिश किया था, and all those 5 are remarkable work in physics. They are landmark in physics. But he got the Nobel Prize for photoelectric effect. But in 1905, he also explained the variation of heat capacity with temperature for solid. उनका ये मानना था कि, and how he explained this, he applied again Max Planck quantization of energy concept. इनका ये मानना था कि जो एटम है जो ऑसिलेट कर रहा है, आपने कहा एटम एक्ट एज ऑसिलेटर, but what he assumed that the oscillators does not oscillate. The atom does not oscillate. Every atom does not oscillate with same frequency. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एटम सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू नॉट है, और उस न्यू नॉट के corresponding एनर्जी will be h nu naught from Max Planck equation. What he said that कि जो ऑसिलेटर्स होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उससे corresponding एनर्जी will be corresponding to each oscillation will be n h nu naught, where n can have value 1, 2, 3, that's an integer. So energy corresponding to one oscillator will be either h nu naught or 2 h nu naught या 3 h nu naught. तो उसके बाद जस्ट लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हमने मीन एवरेज एनर्जी निकाला था, मीन एनर्जी, सो मीन एनर्जी एज्यूमिंग दैट कुछ का एनर्जी एच न्यू नॉट होगा, कुछ का 2 एच न्यू नॉट होगा. अगर आप मीन कैलकुलेट करें, आई एम नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन पार्ट, अल्टीमेटली विल गेट द वैल्यू एच न्यू नॉट अपॉन e to power h nu naught upon Boltzmann constant temperature minus 1. The same thing which we got in the Max Planck black body radiation way up back जाकर देख सकते हैं, we got the same expression. So that's the energy corresponding to each average energy, you can say, corresponding to each vibrational degree of freedom. So total internal energy, you can say the total internal energy will be written as, I can write as U. There are 3 vibrational degrees of freedom, और हर vibrational degree of freedom के corresponding energy average आप ये ले सकते हो, that is for one atom. So for 1 mole it will be multiplied by Avogadro's number, so 3 n naught
into this E, that H nu naught, you can say average value. So this will be 3 n naught H nu naught upon e to power H nu naught upon kBt minus 1. That's the internal energy for 1 mole. जहां आप एज्यूम कर रहे हैं कि हर ऑसिलेटर सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो हर ऑसिलेटर की corresponding एनर्जी सेम नहीं होगी आपकी. So the Cu, again I'll write this Cu, you got that 3 n naught H nu naught upon e to power H nu naught kBt minus 1. This is per mole. So in order to get the value of heat capacity at constant volume, you have to differentiate U with respect to temperature, keeping volume constant. If you do that calculation, just like कि भाई 1 upon T का differentiation with respect to T क्या होगा, minus 1 upon T square, फिर H nu naught K भी आपका constant है. Do all that calculation. E to power X की differentiation will be e to the power X only, or e to power ax will be nothing but a e to power x, all those things. You'll get the final expression as, this will be 3 n naught into a kV आएगा आपका, then h nu naught upon kBt की power 2, then e to power h nu naught upon kBt upon e to power h nu naught by kBt minus 1 k square. So if I differentiate this quantity with respect to temperature, you'll get that value, and using this also, this will be the complete derivation value. So differentiation करने के बाद आपका final expression ये आएगा, that you can check it. Now, using this, he explained that curve. So at low temperature, if I say at low temperature, so h nu naught upon kBt, ये अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये वैल्यू कंपेयर टू 1 बहुत ही ज्यादा होगा. सो एच न्यू नॉट अपन kBt कंपेयर टू 1 ज्यादा होगा, तो e टू पावर h nu naught upon kBt will be also much greater than 1. So this value will be much greater than 1, so you can neglect 1 in comparison to e to power h nu naught kBt. So if you neglect 1 in comparison to e to power h nu naught kBt, तो डिनोमिनेटर में e टू पावर h nu naught kBt का स्क्वायर है, ऊपर आपका e टू पावर h nu naught kBt है, तो एक e टू पावर h nu naught kBt डिनोमिनेटर से हट जाएगा. So CV will be approximately 3 n naught into kB is 3R h nu naught upon kBt की पावर 2 upon e to power h naught kBt, और e to power h naught kBt को ऊपर लेके जाओ, this will become e to power minus h naught upon kBt. ठीक है. So this is the this equation will approximate to this value when the temperature is low. और लो टेम्परेचर पे जो प्लॉट आप देखें, तो प्लॉट आप नॉर्मल कैसे दिखेगा, CV अपॉन R ले लिया, तो ये 3 max, because CV is equal to 3R with temperature. So that's how a typical value is there. So if temperature is decreased, this value will decrease, and this will correspond to 0 at 0 Kelvin. तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना है इस इक्वेशन को यूज करके कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे CV का वैल्यू डिक्रीज होगा, वो कैसे कि अगर मैं T डिक्रीज करूं, इफ आई डिक्रीज T, 1 upon T will increase, but minus of that it will decrease. तो टेम्परेचर घटने पे ये क्वांटिटी घटेगा, और टेम्परेचर घटने पे ये वाली क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में, तो ये बढ़ेगा. तो अगर मैं T डिक्रीज कराऊं, तो ये क्वांटिटी आपका इंक्रीज होगा और ये क्वांटिटी आपका डिक्रीज होगा. बट मैथ्स में आप कोई भी मैथ्स के स्टूडेंट से अगर आप ये कहो कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू विल वेरी टू मच हाई एक्सटेंट कंपेयर टू दिस, मतलब दिस डिक्रीज विल बी मोर प्रोमिनेंट देन दिस इंक्रीज. सो अल्टीमेटली विथ T डिक्रीज, CV will decrease.
क्योंकि exponential part will dominate over this particular part when the temperature is decreasing at low temperature. So at low temperature, with decrease in temperature, CV will decrease, वो explain हो रहा है. वही अगर हमारा दूसरा justify करना है कि at high temperature, the CV should become 3R, should approach that classical value. तो वो कैसे हम explain करें? So CV, फिर से लिखो, that you wrote as 3R and h nu naught upon kBt का square, then this e to power h nu naught upon kBt upon e to power h nu naught upon kBt minus 1 का whole square. That's there, check it. यही था आपका. So that's there. 3R h nu naught upon kBt का square e to power h nu naught kBt upon e to power h nu naught kBt minus 1 का whole square. So at high temperature, so what you can do is this e की power x की expansion क्या होती है? This is nothing but 1 plus x upon 1, then x square upon 2 factorial, like that, x cube upon 3 factorial plus higher terms. So you can expand this. So CV will be equal to 3R h2 naught upon kBt power 2. Numerator में क्या हो जाएगा? Numerator will be, let's assume that x is your h2 naught upon kBt, so it will be 1 plus h2 naught upon kBt plus x square, so h nu naught upon kBt का whole square upon 2 plus some higher terms. ये तो numerator हो गया आपको. Denominator, again e to power h naught kBt के जगह पे you can write 1 plus h naught upon kBt plus half h naught upon kBt का square and so on, higher terms, with this again this minus 1 ultimately. ये +1 and ये -1 आपका cancel हो जाएगा. ठीक है? So this you can write as CV equal to 3R h naught kBt और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूमरेटर में आपका h nu naught upon kBt का स्क्वायर प्लस h nu naught upon kBt power 3 plus so on, higher terms, half h nu naught upon kBt के power 4 upon h nu naught upon kBt plus half h nu naught upon kBt का स्क्वायर. अब अगर t बहुत ही हाई है, at high t 1 upon t will be low, so this quantity low, और उसको हायर टर्म्स को और स्क्वायर क्यूब करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा. So this, okay, we missed that part. This is square also. Here we have a square also. So this will be square also. So at high temperature, this value will be very small. उसको square cube अगर करोगे तो और भी छोटा होगा. So we can neglect the higher terms. These higher terms can be neglected. So CV equal to 3R. न्यूमरेटर में रख लेते हैं सिंपली h naught upon kBt की पावर 2 और ये हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में ये सारे हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया तो h naught upon kBt की पावर 2. इसके टर्म्स में ये और सारे छोटे होते चले जाएंगे, इसके टर्म्स में ये सारे छोटे होते चले जाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिर वैसे ही इसके रिस्पेक्ट पे इन बाकी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप. So look at this value. So this and this will cancel. So CV will approach 3R. That is the classical value. Hence,
Einstein, using the Max Planck quantization of energy, was able to explain the variation of heat capacity of solid with temperature.